हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। स्वागत है वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस हैं एंड वी एग्री दैट वो यहाँ पे डिस्कशंस तो होंगी ही, बिकॉज जो एग्जैक्ट अपडेट है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है एंड ऑल आर हैविंग अ टेंटेटिव फिगर्स एंड दैट इज़ गुड। एटलीस्ट दे आर डूइंग द बेस्ट टू कम आउट विद द टेंटेटिव फिगर्स। सो यहाँ पे अनदर एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशंस हैं दोस्तों, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आपके बीच रखेंगे एंड दिस आर द टेंटेटिव फिगर्स अगेन। सो प्लीज़ कितनी सही हो सकती हैं वो आप खुद से जज, बिकॉज यू आर वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं आप। सो स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट इज़ फॉर ऑल। सो डिस्क्लेमर, हाउ एक्यूरेट इट इज़ वी डोंट नो, but this is an important update that is in the air in the WhatsApp channels regarding the DA and others. So ये WhatsApp के ऊपर काफ़ी ज़्यादा by some of the respected pensioners they are sharing. So saw a couple of or maybe more post on how the ex gratia for the pensioners would be settled under 12th by Petard. So majority claims it to be like 5% on total pension, for 11th 10%, for 10th 20%, 9th के लिए 70 to 80% रहेगा, for 6 to 7, right? So it is very difficult to guesstimate at this time as to how much it would be, because of the variables like associations, bargaining power, IBA, bank managements willingness, and additional financial burdens banks are ready to have. However, it can be equally easy to guesstimate as to how much it can be, it can't be. So upper limit can reasonably be arrived at looking at the following. क्या है वो? If 11th by Patad retirees are given an increase exceeding 3% of the total pension, they will be drawing pension more than their counterpart retirees at the same stage under 12th, right? So they will be drawing pension more than 50% of their salary. तो ये एक सिनेरियो हो सकता है. So component for superannuation benefits under latest by Patat. So they will be drawing more than the pension updation being sought on the lines of Reserve Bank of India. So let's rule it out. If 10th bipartite retiree is given an increase exceedingly 5.5%, सिमिलरली सिनेरियो होगा, उसका जो कॉन्ट्रापार्ट होगा उसकी जो पेंशन है वो फ्रेंड्स ज़्यादा होगी. अगर हम बात करें फॉर द 9th bipartite, द कैप अराइव्ड एट इज 7.5%. However, before that period, calculations are on entirely different scale, as there was no capping on loading for superannuation during those bipartite settlements. For 8th retirees, the cap exceeds 20%. Right? So, above are restriction parameters, or let's say limiting factors. However, there is one most important enabling factor also, which can allow banks to go for higher amount of ex gratia, और वो है, so there is no provisioning requirement for payment of ex gratia, which means that whatever payments are made on this head during the year are only, वो सिर्फ एक चार्ज होंगी on the profit and loss account of the bank concerned, unlike increase in pension which requires provisions to be made for the future liabilities. सो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझना होगा, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेंशन एंड एक्स ग्रेशिया. सो दोस्तों, यहाँ पे अगर एक्स ग्रेशिया कोई बैंक पे करता है, उसके लिए उसको प्रोविजनिंग फंड्स की नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है एक्स ग्रेशिया से, फॉर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर. बट जो एक पेंशन की लाइबिलिटी होती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है. सो फॉर दैट बैंक हैव टू डू द प्रोविजनिंग. उसके लिए राइट प्रोविजनिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द limitations are there for the ex gratia calculation. Hope you got an idea from this video. So that's all for this session. So please subscribe to channel and share this important update among other respected senior pensioners, and stay tuned to the channel for the latest updates.